Hello everyone, this is Rachna Sharma and you are watching Food Tech Geeks, where I upload videos, lectures, tutorials, career guidance videos, exam related videos on food science and technology. For any food tech exam, knowing FSSAI and other food regulatory bodies is very important. So therefore, in our today's video, we will be covering the various food safety legislations, what were the various food regulatory bodies before the establishment of FSSAI, like PFA and different Essential Commodities Act, and how all these different regulatory bodies came under one umbrella and the FSSA Act came into existence, and how it led to the establishment of FSSAI. So all these important points will be discussed in this video. So before we start our lecture, please make sure that you subscribe to the channel, and also we are having our Telegram page, that is Food Tech Geeks, and make sure you subscribe to our Telegram channel also, so that you do not miss any important update related to food science and technology. So let's start our lecture with knowing what is the importance of food laws and regulation. हमें food laws and regulation की ज़रूरत ही क्या है? So in our daily life also we are having a lot number of rules and regulations, like we are having traffic rules, we are having civil laws, we are having criminal laws. So there are different laws. So ये जितने भी laws हैं, they are making our life more safe, and they are important so that every individual can live their life with all their rights. So in the same way, we need certain set of rules and regulations for our food system also. So जब भी food की manufacturing होती है, from the starting to the end product, we need certain set of rules and regulation which can ensure that the food is safe at every step, and a safe food कैन बी प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर. तो ये चीज को इंश्योर करने के लिए, फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, वी नीड अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, और वी कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड लॉज एंड रेगुलेशंस. So the second important point for the requirement of food laws and regulation is that when any food substance comply to these rules and regulation, it opens the market for that product. Like अगर कोई भी एक food product है, if that is being made under the rules and regulation, so it is acceptable in the market. People are accepting that because they are ensured that yes, this particular food product is being made by those particular sets of rules and regulation, so it is completely safe to be consumed. So therefore, when a food is made under certain rules and regulations, by complying by complying to the laws and regulations which are being made by the government, it gets the confidence of the people, and therefore it gets the market acceptance. So therefore the rules and regulations, the food laws and regulations are important to give the product market access, a large market access. So if a product is being made under certain rules and regulation, it will be firstly acceptable by the consumers, and the secondly, it will be having a large global market access. So therefore the food laws and regulations are very important. So if we talk about India, कि इंडिया में कौन से फूड सेफ्टी लेजिस्लेशंस थे, कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज थी, तो जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि फूड रेगुलेशंस होते हैं तो इट इंश्योर्स दैट द फूड इज सेफ, द फूड इज नॉट बीइंग एडल्ट्रेटेड, एंड इट इज completely safe to be consumed. So initially, if we talk about the initial period up to the period of 1954, up to year 1954, जितने भी different provinces थी या जितने भी independence के बाद जितने भी states थी, all the states were having their independent food safety legislations. Like for example, Assam was having its Assam Pure Food Act 1932, or Bengal has its independent legislation, that was Bengal Food Adulteration Act, and Orissa was having its individual independent act, that was Orissa Prevention of Food Adulteration Act. So these are the some of the examples. So in the same way, every state was having its independent individual food safety legislation. तो हर स्टेट के खुद के रूल्स होते थे, खुद के नॉर्म्स होते थे, खुद की लेजिस्लेशंस होती थी. उसके अकॉर्डिंग उस स्टेट में किसी भी फूड इंडस्ट्री को अपने फूड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना होता था, प्रोसेस करना होता था, उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, मार्केटिंग उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उन्हें करनी होती थी. तो दिस वाज द सिनेरियो until 1954. बट उस टाइम पे क्या हुआ कि
दिस सिस्टम हैज मेजर ड्रॉबैक्स। जो हर इंडिपेंडेंट स्टेट के पास खुद के फूड सेफ्टी लेजिस्लेशंस होते थे, उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती थी। देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस व्हिच वर एज द नंबर वन बीइंग लाइक if there is a same product, for example any packed product that is the same product which is being manufactured in Odisha and that is being manufactured in Haryana, so the same product is being manufactured in different states of the same country, but as different states are having their different legislations, so the different standards will be there for the same product. Second point being, for the same offense different states were having different punishments. The third thing being, as the different states were having different legislation, so their implementation was also very different. Like if the same company is having different plants in different states, so it is very difficult to implement the different legislations for the same product. So the third problem was that thing. And then the last thing was the interstate trade was very difficult, because the particular state is having some another standard for the same product, while the other state is having some other type of standards for the same product. So these were certain limitations of the individual state act. So इन्हीं सारी problems को देखते हुए, इन्हीं सभी limitations को देखते हुए 1937 में एक कमेटी बनी थी, दैट वाज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 1943 में भी एक बनी थी फूड अडल्ट्रेशन कमेटी. सो ये दो अलग अलग कमिटीज बनी थी डिफरेंट डिफरेंट टाइम में. सो दे रिव्यूड द सिस्टम, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सिस्टम रिव्यू किया एंड देन दे सबमिटेड देयर रिपोर्ट एंड देयर रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. और उस पूरे रिकमेंडेशन से एक चीज जो सामने निकल के आई कि वी नीड टू हैव वन सिंगल लेजिस्लेशन फॉर द होल कंट्री. और इसी सब के बाद, इन्हीं रिकमेंडेशंस के बाद, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 15th June 1955. When the PFA Act came into existence, so the previously existing different individual states act were सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड कर दिया गया और PFA एक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया. एंड it was amended 3 times after its existence, like in 1964, then in 1976, and then in 1986. And if we talk about the act, so there are total of 25 sections in the act. और जब इसको पूरे कंट्री में एग्जीक्यूट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर. उस टाइम पे इसको जम्मू एंड कश्मीर में एग्जीक्यूट नहीं करा गया था. और इन 1972 it was executed in Jammu and Kashmir also. So when it was made, the act was made, at that time the committee had 54 members, so the total number of members were 54. And there were different subcommittees in the Prevention Act. So there were total of 9 subcommittees. So the 9 subcommittees were Committee on Food Laws and Legal Advisory Committee, Committee on Food Labeling, Committee on Food Additives and Contaminants, Committee on Milk and Milk Products, Committee on Microbiological, Committee on Oils and Fats, on Pesticide Residues, Nutritional Food for Special Dietary Use of Infants, and Methods of Analysis. तो ये different sub committees थी जो कि function कर रही थी PFA Act के अंडर, different sections of food को monitor करने के लिए, उनके लिए rules and regulation बनाने के लिए. तो ये सारी different sub committees थी. PFA एक्ट के अलावा भी वी वर हैविंग सर्टेन अदर ऑर्डर्स. सो ये सारे ऑर्डर आते हैं असेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर. सो वी वर हैविंग डिफरेंट ऑर्डर्स अंडर असेंशियल कमोडिटी एक्ट. सो एज द नेम सजेस्ट असेंशियल कमोडिटी एक्ट, सो जितनी भी कमोडिटीज जो असेंशियल है, लाइक मिल्क, फ्रूट्स, मीट, सो ऑयल, सो कुछ डिफरेंट ऑर्डर्स बनाए गए थे इन सारी असेंशियल कमोडिटीज के लिए, एंड दे ऑल केम अंडर असेंशियल कमोडिटीज एक्ट. सो पहला नंबर पे जो है दैट इज फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955. इसको 1955 में इम्प्लीमेंट करा गया था एंड इट केम अंडर असेंशियल कमोडिटीज एक्ट. सो द मेन ऑब्जेक्टिव of fruit products order was to manufacture fruit products and vegetables. So इसके अकॉर्डिंग ये है कि जितने भी फ्रूट प्रोडक्ट्स के लॉट्स हैं उन पे कोड नंबर होंगे, उनकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी. लाइक इफ अ प्रोडक्ट इज बीइंग पैक्ड, अगर कोई प्रोडक्ट पैक हुआ है फ्रूट से रिलेटेड, कोई भी प्रोडक्ट है, एनी प्रोडक्ट विच इज बीइंग रिलेटेड टू फ्रूट, लाइक कैंड फ्रूट्स हैं, कैंड वेजिटेबल्स हैं, या कोई फ्रूट जूस है, और इवन द फ्रेश
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर बीइंग पैक्ड, उन पे भी उनकी डेट ऑफ पैकेजिंग होगी, और जो प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उन पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी है, उनके ऊपर उनकी एक्सपायरी डेट होनी है. सो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर दिस ऑर्डर. और जितने भी fruits and vegetables processing units हैं, it is important for them to have the license. So this was made mandatory under this order. Next order we have is Meat Food Product Order 1973. So it also come under Essential Commodities Act, and इसके अंडर जितने भी मीट के प्रोडक्ट्स हैं they were covered under this order. So इसमें यही चीज़ important थी कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं meat products के, they are required to have the license, and it is important to enforce the sanitary and hygienic conditions in the processing areas. और जितने भी जो भी quality parameters हैं, जो भी इस order के अंडर quality parameters prescribed किए गए हैं, it is very important for all the manufacturers to follow all those points. So the manufacturing, the packaging, the labeling, and the marketing of the meat products are required to be done under the rules and regulations prescribed by these order. उसके बाद we are having Vegetable Oil Products Regulation Order 1998, और इससे पहले we were having two different orders. One was Vegetable Oil Product Order 1947, and we were having Vegetable Oil Products Standards of Quality Order 1975. तो ये दो इंडिविजुअल वेजिटेबल ऑयल से रिलेटेड हमारे पास ऑर्डर्स थे. उन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल ऑर्डर को लाया गया, दैट वाज वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन ऑर्डर. सो दिस वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 1998, और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो ये ऑर्डर बनाया गया, दिस वाज मेड टू इंश्योर प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स. तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी सेल, उनकी पैकेजिंग, उनकी लेबलिंग इस ऑर्डर के अंडर होगी. आफ्टर दैट वी वर हैविंग एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर, सो 1988, and it ensures the availability of safe and quality edible oil. So this also comes under Essential Commodity Act. और इसके अंडर भी यही चीज़ है कि what were the various tests which can be performed to ensure the safety of edible oil, and what were the various packaging rules and regulations of the edible oil. So all these different things were covered under edible oil packaging order. Then we had Solvent Extracted Oil De-oiled Meal Order 1967. So we know that the refined oil is also being produced by the solvent extraction method. So it is very important to monitor the quality of the solvent used and the quantity of the solvent which will be in the final product. So all these things are monitored under this order. तो इस order के according यही चीज़ है कि which particular solvent is to be used for this solvent extraction method. So इसके according the standard solvent which was being described was hexane, कि जो भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड होगा ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए डिफरेंट ऑयल सीड्स से, वो होगा हेक्सेन. तो हेक्सेन को यूज़ किया जाएगा. और जितने भी डी ऑयल्ड मील है, लाइक जो भी फ्लावर बनता है, लाइक सोयाबीन फ्लावर जो हमारा बनता है, दैट इज ऑल्सो बीइंग मेड फ्रॉम द डी ऑयल्ड सोयाबीन केक. जब सोयाबीन्स के से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद जो केक बन जाता है, उससे हमें फिर सोयाबीन फ्लावर मिलता है. उसकी डीफैटिंग करते हैं, उसके बाद हमें सोयाबीन फ्लावर मिलता है. तो ये जितने भी अगर कोई फ्लावर हमने एक्सट्रैक्ट करा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड डी ऑयल्ड मीट से, तो उनसे रिगार्डिंग उनके रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो सारे इस ऑर्डर के अंडर कवर होते थे. So, and then we have our milk and milk product order. So as the name suggests, it was related to the milk and milk products. So the main objective of this order was to maintain and increase the supply of milk and to regulate the production and the processing and distribution of milk and milk products. तो इसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ भी एक और चीज़ जो है वो इसके अंडर कवर की गई थी. दैट वाज कि if any plant is handling more than 10,000 liter of milk per day, so it needs to be registered with the central government. So ये कुछ licensing और registration के rules and regulations भी इस order में दिए गए थे. So these were the different Essential Commodities Act which were in action at that time. But इन सब के साथ भी
कुछ प्रॉब्लम्स थी, इनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस थी, देयर वर सम कॉन्ट्राडिक्शंस, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव साइटेड वन एग्जांपल कि इफ वी गो अकॉर्डिंग टू पीएफए रूल्स, अगर हम पीएफए रूल्स के अकॉर्डिंग जाते हैं तो इट परमिट्स द यूज ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इन सर्टेन फूड्स, लेकिन अगर हम फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाते हैं तो इट डज नॉट अलाउ द यूज ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि एक एक act है which is allowing you to use something but the same thing is being not allowed under the another act। so एक ही टाइम पे ऐसे दो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या दो डिफरेंट एक्ट्स हैं जो अभी वर्किंग हैं, जो अभी इम्प्लीमेंटेड है, बट उनके दोनों के नॉर्म्स अलग अलग हैं। तो देयर वाज अ क्लैश बिटवीन द डिफरेंट एक्ट्स, तो उसकी वजह से काफी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स थी। सो देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड कि वी नीड टू हैव वन सिंगल अथॉरिटी, एक सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि पूरे कंट्री के फूड लॉज एंड रेगुलेशंस को मॉनिटर कर सके, ताकि ऐसे क्लैशेस ना हो या ऐसी कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो या कोई ऐसी वेरिएशन ना हो। सो इन सब चीजों को देखते हुए इट वाज डिसाइडेड टू इंटीग्रेट ऑल द फूड लॉज अक्रॉस द कंट्री, जितने भी फूड लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया जाए एक अथॉरिटी के अंडर। और इस तरीके से FSSA Act, that was Food Safety and Standards Act 2006, was established under the Ministry of Health and Family Welfare. This thing is very important to know that FSSA Act came under Ministry of Health and Family Welfare। 23rd August 2006 को इस बिल को पास किया गया पार्लियामेंट में कि now we will integrate all these different laws and regulations and we will have one authority for food laws and regulations। So in this diagram also you can see that all the different laws and regulations like PFA Act and all the different Essential Commodities Act, they all came into one umbrella। वो सब एक umbrella के अंडर आ गए, that was FSS Act, Food Safety and Standards Act 2006 के अंडर इन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया। So if we talk about the objective of Food Safety and Standard Act, so just now we have discussed that the main objective was to consolidate all the different laws related to food. Its main objective was to integrate all the different laws under one umbrella। The second thing was, under FSS Act, FSSAI was established, a organization, a authority, Food Safety and Standards Authority of India was established under this act। The third thing, the main objective of this FSS Act was to regulate the manufacturing of the food products, the storage of food products, the distribution, the sales, the import and the export. Every activity related to the foods will be regulated by this act। So these were the objective of Food Safety and Standards Act 2006। Now let's discuss about FSSAI, a brief description of FSSAI। So now just we have discussed that FSSAI was established under FSS Act 2006। So this was an autonomous body, that means it can take a decision by its own without being under the influence of any other authority or any other organization। FSSAI has the power to take its own decision on its own। तो जो FSSAI है वो अपने डिसीजंस खुद लेती है कि कौन से रूल्स बनने हैं, कौन से रेगुलेशंस बनने हैं। इट टेक्स इट्स डिसीजंस बाय ओन एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। And we know that FSSAI was established under FSS Act 2006, and the main important work of the FSSAI is to lay down different standards, different regulations, different laws, different legislations related to foods, for the manufacturing of the food, for the storage of food, for the distribution of food, for the packaging, labeling, for the import, export of food. All these regulations are to be made by FSSAI। These are the functions of FSSAI: to make the standards for the foods, to prepare guidelines for the accreditation of certification bodies, like what will be the different certification bodies, like we know that there are various certification bodies which provide certificate to the food industries। So what will be the criteria of establishment of these particular certification bodies? These are also being established by FSSAI। and the different food laboratories, जितनी भी जो laboratories हैं, जो food laboratories हैं, जो central food laboratories हैं, उनके लिए क्या guidelines होंगी, उनके क्या प्रोसीजर्स होंगे, उनकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी। दीज वर ऑल्सो बीइंग कवर्ड अंडर FSSAI। वो सारी चीजें भी FSSAI के अंडर ही हैं।
कौन सी कुछ ऐसी टेक्निकल एडवाइजरी कमिटीज होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होंगी, जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होंगी, जो डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज के लिए होंगी, वो कौन सी बॉडीज होंगी, उनकी कैसे एस्टेब्लिशमेंट होगी, उनकी वर्किंग कैसे होगी, वो भी एफएसएसएआई ही डिसाइड करती है। तो डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वी नो कि एफएसएसएआई टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लेके आता है, फूड इंडस्ट्रीज के लिए, फूड प्रोफेशनल्स के लिए, और इवन फूड टेक स्टूडेंट्स के लिए जो भी डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जनरल पब्लिक के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, these all are being provided by FSSAI. And the most important, how to make people more aware of the food safety, how to make them more aware of the different food standards. FSSAI always work on educating people about food safety. So these are the basic functions of FSSAI. And if we talk about the different food products for which FSSAI makes standards, so there is a lot number of products for which FSSAI makes standards, ranging from dairy products, fats, oils, fruits, cereals, meat, fish, sweets, salt, spices, beverages, different proprietary foods, irradiation of food. All categories of foods are covered under the FSSAI standards. So FSSAI makes standards for all these different food products. So now if I talk about salient features of the Act, of the FSS Act, so we can say that the Act emphasized on making a food safety management system. The main focus of the Act is to make the systems in such a way that at each and every stage of food manufacturing, the food safety can be ensured. So the main emphasis of the Act is to make a food safety management system so that at every step of the manufacturing of the food product, the food safety can be ensured. The Act also focuses on the international trade, how to increase the export of the products, and what will be the various regulations for the foods which are supposed to be imported to the country. So it also make regulations regarding the international trade of food. It not only covers the traditional foods, but the Act also covers health foods, food supplements, nutraceuticals. So it covers all the different types and different varieties of food. And the last and the important feature of the Act is it also grade penalty for the different offenses. So in the last, let's have a glance over some of the facts about the FSS Act. So if we talk about certain important facts of the Act, so there are total of 2 schedules in the Act, and there are total of 12 chapters. The Act is divided into 12 chapters, and the total sections in the Act are 101. So in these 101 sections, the whole Act is being described, the different rules and regulations of each and every food product, and about the FSSAI authority. Everything has been explained in this Act, in these 101 sections. So slowly and gradually we will be covering all the important sections of the FSS Act. So that is all for today's video. We have covered the evolution of FSSAI and the FSS Act, how FSS Act came into establishment, and then how it led the establishment of FSSAI. We have covered all these things. In the coming videos, we will be covering the organizational structure of FSSAI and all the important sections of FSS Act. So see you in the next video. Share this video with your friends, and if you like the video, please give it a big thumbs up and subscribe to the channel, and see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.